Let's start topic 2, that is based on internal energy and the first law of thermodynamics and its mathematical form in difference process. Okay, so question number 1 is nothing but 1 gram of water changes from liquid to vapor phase at constant pressure of 1 atmosphere. The volume increases from 1 ml to 1671 ml and the heat of vaporization at this pressure is 540 calorie per gram. Find the increase in internal energy of water, and 1 liter into atmosphere is equal to 101 joule. So first we will apply the formula W is equal to minus P delta V, and yes, delta V is equal to V2 minus V1. And yes, pressure is 1 atmosphere, students, and V2 is 1671. It is increases from 1 ml to 1671. Okay, this is initial volume is 1. Now this is in a ml and this condition we have in a liter, so we have to divide the term by 1000, so we will get the answer minus 1670 upon 1000. If you will multiply this 101, so directly you will get the answer in joule, that is minus 168.67. okay, if yes, the heat of vaporization means Q is given in a calorie, so we can multiply 540 calorie into 4.184, so this is nothing but 4.2, so you can convert calorie to joule. क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि ये हमारा जूल में है तो ये भी हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा, that is 2268. now delta E is equal to Q plus W, so it is minus 168, sorry, Q is 2268, okay, and W is minus 168.67, so our final answer is 2099.33 joule. Okay, now understand the question first, then decide what is given, and then enlist the data which you have to find out. Okay, now the second question is, a gas occupies 2 liter at STP and it is provided 300 joule heat so that its volume becomes 2.5. Now W is equal to minus P delta V, so it is minus 1 in bracket 2.5 minus 2, okay, so it is minus 0.5. so yes, the unit is liter into atmosphere. If we multiply this with 101.3, you will get the answer in a joule, that is minus 50.65. now if you want to calculate the internal energy, sometimes internal energy is represented by delta U, okay, but in a JEE, generally in a reference book, it is represented by the delta E. So Q plus W, Q is given in the question, that is 300 joule, okay, इसलिए हमने W को भी जूल के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, तो minus 50.65, so it is 249.35 joule. A sample of gas present in a cylinder fitted with a frictionless piston expands against a constant pressure of 1 atmosphere from a volume of 2 liter to 12 liter. During the process, it absorbs 600 joule of heat from the surroundings. Calculate the change in internal energy of the system. So first enlist data. Q is 600 joule, delta V आपको find करना है, that is 12 minus 2, that is 10 liter. Okay, so W is equal to minus P delta V, this is 1 atmosphere, so this answer will be minus 10, multiply with 101.3, so you will get the W in a joule, it is definitely 1013.
Okay, minus. Fine. Now, if you want to calculate the delta E, then it is Q plus W. Your Q is 600 joule and your W is 1013. So final answer is minus 143 joule. Okay, now next. Two mole of an ideal gas at 2 atmosphere and at 27 degrees Celsius is compressed isothermally to 1/2 of its volume by a constant external pressure of 4 atmosphere. Calculate Q, W and delta E. And R is also given. So W पहले फाइंड कर लेते हैं. फॉर्मूला है माइनस पी डेल्टा वी. ठीक है, दिस इज पी एक्सटर्नल. ओके, पहले V1 फाइंड करना होगा. तो V1 के लिए PV इज इक्वल टू NRT. फार्मूला से हम NRT बाई P ले लेंगे. N जो है वो हमारा 2 मोल हो जाएगा. R 0.082 लेना है हमें. ठीक है, टेम्परेचर 27 है तो प्लस 273 कर लेंगे तो वो 300 केल्विन आ जाएगा. दूसरी बात ये प्रेशर इज गिवन दैट इज 2 एटमोसफियर. सो आपको वैल्यू रख देनी है 0.082 इंटू 300. ओके, अपॉन प्रेशर आपको कितना लेना है, 2 लेना है. ओके, आप 1/12 भी कर सकते हैं 0.082 की वजह से, तो आप इजी कैलकुलेशन कर पाओगे. ओके, सो फाइनली योर आंसर इज 24.6 लीटर. नाउ VF इज VI/2. ये आपको पता चला ना. देखिए, 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम बाय अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर. तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से हाफ हो गया है, उसके बराबर होगा. सो 24.6 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 12.3 लीटर. ओके, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. सॉरी, 4th क्वेश्चन के अंदर और भी टर्म है. W भी फाइंड करना है और E भी फाइंड करना है, वो मैं भूल गई. तो चलो वो भी फाइंड कर लेते हैं. 4 एक्सटर्नल प्रेशर, फिर 12.3 V2 minus 24.6 V1. So final our answer जो होगा that is 49.2 लीटर. उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 101.3. So finally it will be 4984 joule. Okay, now you know the formula of delta E, Q plus W. Okay, यहाँ पे जो डेल्टा ही E है वो आपको 0 लेना है. सो इट विल बी Q प्लस 4984. सो Q इज इक्वल टू माइनस 4984 जूल. ओके, तो पहली बात ये है कि क्यों डेल्टा ई 0. तो भाई थियोरी में हमने देख लिया था कि अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन है, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा होता है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज जो होती है वो क्या होती है, 0 हो जाती है. नेक्स्ट, a system is provided with 100 joule of heat. Work done on the system is 20 joule. What is the change in internal energy? Q is 100 joule, W is plus 20 joule. So delta E is equal to Q plus W. It will be 100 plus 20, 120 joule. Okay, next question. An insulated container is divided into 2 equal portions. One portion contains an ideal gas at a pressure P and temperature T, while the other portion is a perfect vacuum. If a hole is opened between the 2 portions, calculate the change in internal energy of the gas and change in temperature of the gas. For the insulated system, what we can say, Q is equal to 0. The gas is allowed to expand against volume. Okay, the process of free expansion, and thus W minus P delta V. And for a free expansion, your W will be 0. And if W will be 0, then your P external will be 0.
and thus from first law of thermodynamics, delta is equal to Q plus W. Okay, so Q is also 0 and isolated system है, हीट और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो ये तो ज़ीरो हो गया, W भी ज़ीरो है, तो डेल्टा ई भी आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो. Internal energy change is zero, or internal energy of a gas remains constant during free expansion. Okay, E is proportional to T, and thus the temperature of the gas will also remain constant. Okay, so students, थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर जो है वो बहुत ही लेंदी है. आप वन बाय वन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, ठीक है. मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन खुद करने के लिए भी दे दूँगी. ओके, तो पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया था किसके बेसिस पे, सिर्फ वर्क के बेसिस पे, उसके हीट की फार्मूला अप्लाई करने के किया हमने, क्यू डेल्टा वी वाला. और दूसरा जो क्वेश्चन था वो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बेसिस पे सॉल्व किया.